So this 3D object is to be drawn. For this, what we have to consider, we have to draw a 2D view, and then we consider 3D. So for ease, I can take a screenshot. Of this object and paste it over here. So for ease, I have placed over here. The units are inches. Now units are in millimeter. So first we can consider the units UNITS. Units, unit decimal, precision, zero fraction is sufficient. Inches, no, this is in millimeters. Say okay. Now what we have to draw? We have to draw a one rectangle having the size of 100 by 60. Or it is better to draw the one rectangle with the size of 50 by 60. So I'm considering a line. Line is started from here, and then we have 50 per 60, then 50 C. So one object is created. After creating one object, I will select this all and copy it. Better to join them, J-O-I-N, join. All are joined as a polygon. And then I consider the offset tool. The distance is 10. I will select this rectangle. The inner object is created. Now I select these two, copy it. Another copy is created at the end. Now I move the cube to the AC isometric. Now the dimensions are to be added. I can add the dimensions. Let's change the interface from a 2D to 3D. Here the press pull is the best tool. I will select the press pull, select the inner section, select over here and extend it up to 40. And for the second object, I will press the tool over here, press pull, click over here and extend it upward to 20. Change the gray and the object is created. The simplest method, which I think that to create this object. Now in the 3D basic, we can add a dimension X and Y by this, but now here you have a coordinates, universal coordinate system. There is a one window, there is one section for the coordinates. Word UCS means standard. In spite of this word UCS, we can have another UCS also. We can have x-axis, y-axis, z-axis. So change the x-axis to z-axis. So we are rotating the axis about z-axis. And x-axis के साथ rotate कर सकते. So x अलग जाते हैं, y अलग जाते हैं. If I change the axis to the y-axis, so y-axis के माँ change it. y-axis change थी. अगर मैं x-axis के change करना शुरू किया, तो ही x-axis change थी शुरू थी. एक्सिस चेंज वेठा थे तो क्यूब जी हालत कड़ी थी एक्सिस चेंज करना. So if you feel any trouble at any time, no problem. You can return back by clicking on the word UCS.
all the things will be standardized. So we have a fixed axis. We can rotate any of the axes. In addition to this, we have also axis based on the views or face or the object. मिसाल तौर पे ही face UCS based on the face. Make sure that snap to UCS is active. E symbol active हो जाए. Snap to UCS is active. Is this is active? ये जो section active है तो आंसर ये active है. E symbol active है. Snap UCS to active solids. ये सब नहीं active. If it is active, now move back over here. I can select the face in a 3D points arrow select the face. If I select the face and select any of the face, look at that. UCS is changed. So UCS असानी कर्सर सां गॾु मां हिनखे जिते बि रखणु चाहियां रखी सघां थो. हिन फेस ते हिन फेस ते मां किथे डायमेंशन ॾियणु थो चाहियां. मां हिन फेस ते डायमेंशन ॾियणु थो चाहियां न त इन फेस ते रखी थो छॾियां. So now we can go to the accept करे छॾियोसीं. The UCS change थी हलियो. हाणे ही x एक्सिस आहे मथे y एक्सिस थी हलियो. हाणे y एक्सिस ते असां ड्रॉ करे सघूं लाइन. So I'm returning back to the 2D view, 2D tools. हिते मां डायमेंशन सिलेक्ट कयां. लीनियर डायमेंशन फर्स्ट एंड खां वठी सेकेंड एंड ते डायमेंशन. ॾिसो हाणे 40 अची. हाँ, रिपीट हो गया. So look at that. Now we have to draw this object. What is the overall length? 125. So we have to make a one rectangle. What will be the size? Width of a rectangle is 125. What is the length? Length is 90. So we have to create a one rectangle with the size of 125 to 90. Then at the size of 45, we have to draw one vertical line. What will be the length of this line? Length of this line is equal to the two steps. This is 90. So each step is of 30. 30, 30, and 30. So this line will be of 60. And 45 थियो 125 માં 45 है तो भाई घणा बचा 125 માં 45 है घणा बचा 80 तो हितां खां वठी हेसि ताईं 80 है लिखियो पियो 80. हाणे हर स्टेप जी डेप्थ घणी आहे 20 20 20 तो ही जेको टोटल हाइट आहे इहा 60 आहे. So move over here. So let's create a new drawing. You create a new drawing. So what is the overall dimension? I'm selecting the line tool. The overall dimension is that. Click over here. 125. This is the length. Length is 125. The width हुई है जी. Length घणी है? हाँ, unit millimeter. Length है 90. Then 125. And close this. So I have created a rectangle. Width is 125 and height is 90. After creating this, we have to create two more rectangles or two more lines. I will select the line.
from one corner, move upward. At the length of 20, I will move towards the left, then 80 and downward. Again, I will select these two. The 30, the 20 na 30, 90 and total. 90 the trace steps. So select the line, select over here, move upward to 30, then move to the leftward 80. 80 you step and downward hit click करो. And he by line select करे. I will click the copy tool. इन्हें जो bottom खां वठी हेसी ताईं रखी छॾियांसि. त ही structure ठही वियो. Now I have to use a AC isometric. हिन जी height ॾिसी था वठूं. Total height है 60. हर एक जी height है 20. So हिनखे मूंखे increase करणो. I use a press pull. हिन section खे select कयमि. Select करण खां पोइ मथे वञणो आहे 60. हिनखे shade change कयमि shades of grey. वरी press pull. ॿियो section जेको आहे उहो 40 ताईं हुजे. टियों section जेको आहे 20 ताईं हुजे. The object is created. So the creation of third object is very simple. You have to draw a one cube, a one box of 100 by 100 by 100. Then you have to draw one circle on its any face, one cylinder on the side. So we have to draw actually the two basic objects. How we can draw? Let's move back to the AutoCAD. Start the new drawing. We are on the surface. So let's directly consider the AC isometric and change the view to the shades of gray. Okay. Now directly let's draw the box. Please listen. Look at over here. Starting the box. So he said that specify the first corner. I say that this is the first corner. Now the rectangle is started. In the rectangle, the dimension is 100 by 100. So I will write 100, 100. Then use a tab key in order to move to the second dimension, which is also 100. And press enter. So 100 by 100 surface has been created. Now I will move upward and again set a dimension as 100. So the one cube is created. Now as a second we have to select to draw a one cylinder at the center of the face. In order to do this, what should be on? From these three lines, select over here, the dynamic UCS should be on. So the dynamic UCS symbol is over here. This is the symbol for the dynamic UCS. This should be on. Now this is off. This should be on. Once the dynamic UCS is on, now we can draw on any face. So we want a center of the side, center of one side. How we can get a center of a side? We can draw the temporary line. Let's draw the line. I have clicked the line tool. I will draw one diagonal from one corner to the opposite corner. Okay, the line is drawn. The center of a line will also be the center of the square. Diagonal center, face jo center. So now I can go to draw the cylinder in this 3D box. Arrow ke click here, then we have a cylinder. I will select the cylinder. He says specify the center point of a base. A center point base to charge is center line. Okay, midpoint जेकी line जे इहो face center ही है. इनके click कयमि. हाणे चतो radius ॿुधायो. Radius is 25. The diameter is 50. Radius is 25.
Now move upward 50, length energy रखो 50, that's all. अरे ही जी की लाइन था इसी ने ये लाइन के सिर्फ सिलेक्ट करे एडिशनली ये जी की एक्स्ट्रा लाइन हुई सिर्फ इन्हें के सिलेक्ट क्यों ठीक है लाइन सिलेक्ट थी इन्हें डिलीट कर दिया द ऑब्जेक्ट इज क्रिएट लेट्स ड्रॉ द लास्ट ऑब्जेक्ट gear the exact dimension for the gears are not given we have to consider one gear having the sprocket type of arrangement so the chain can be inserted we are here AutoCAD let's draw the new drawing now in order to draw sectional view let's draw one circle the dimension of circle is not important here you have to draw one circle after drawing a circle draw another small circle at the one quadrant okay the two circle has been drawn now we have to consider the array we have learned the array in the 2D already 2D how to draw the 2D array so in order to draw we consider a polar array so we will select the polar array so he said select the object so we will select the first small circle that the object we want to make a copies select the first small circle press enter now I say that specify a center of the array what will be the center about which the objects will be copied so we will select the center for the large circle so automatically the 6 objects have been created we can increase the objects by over here these are 6 we can make them as 10 so now the 10 objects are there so we have created 2 circles one small circle larger circle so now we want to create the polar array so for polar array here we select the polar array after selecting the polar array command we say that select the object तो ऑब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है जो आप जिसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है जिसको सर्कुलेट में बनाना है जिसकी ज्यादा कॉपी चाहिए एरे में यही होता है तो वी विल सिलेक्ट द स्मॉल सर्किल आफ्टर सिलेक्टिंग द स्मॉल सर्किल वी विल प्रेस द एंटर की फॉर कंफर्मेशन कंफर्म हो गया अब कहेगा कि भाई सेंटर बताओ जिसके अराउंड में सारे ऑब्जेक्ट बनाओ तो सेंटर कौन सा है ये जो लार्ज वाला सर्किल है इसका सेंटर सिलेक्ट करना है लार्ज वाले सर्किल का सेंटर सिलेक्ट करना है जैसे ही सिलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट 6 जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ड्रॉ हो जाएंगे so we can change them right now I want 10 so I make it 10 अब कटिंग करनी है so whenever the array is created whenever we select any of the object all the objects are selected because all the objects are working as a one combined set and at any time we can change it but if we want to make a sprocket so we should have to select all these and we have to explode them what we use a explode command here there is a explode command what is the purpose of explode to disintegrate all the parts हर एक टुकड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा explode यूज किया so now all the objects are separate now here we want to remove some of the objects so we use a trim tool use किया select trim tool and select all the objects and press enter अब सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा और बड़े सर्किल का ये वाला हिस्सा डिलीट करते चले जाएं
तो ये स्प्रोकेट बन गया। एडिशनली लेट्स ड्रॉ अनदर सर्किल ऑल्सो, एक सर्किल और बना देते हैं। ठीक है, इसके सेंटर से एक और सर्किल बना देते हैं। काफी है। Now let's change the view to the AC isometric. Here tools change कर लें, 3D basics। अब तो शेड यूज कर लें। Consider the shade is shades of gray, and then use a press pull। प्रेस पुल को क्लिक किया, select this object इनके सेंटर में, select over here and move upward। कितना, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना स्प्रॉकेट थिक रखना है। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो 2D में बनाने के बाद, जस्ट यू हैव टू एक्सटेंड इट। इसमें क्या और अल्टरेशन कर सकते हैं? यस, वी कैन डू अ लॉट। मिसाल के तौर पे मैं कुछ सर्कल और बना दूं, इसके सेंटर में एक और सर्कल बना दूं। ठीक है, अब 2 सर्कल्स आ गए। तो आई यूज अ प्रेस पुल, हायर वाला सेक्शन इसको एक्सटेंड किया, और इसका वाला दूसरा वाला जो सेक्शन है इसको ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। स्प्रॉकेट इस तरह का बन गया। कैन यूज 3D ऑर्बिट टू व्यू दिस ऑब्जेक्ट। मैं चाहूं कि here at the बॉटम में मैं चाह रहा हूं कि एक और सर्कल बनाऊं, considering the same center, and then consider the orbit tool। मैं चाह रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाए, तो select the press pull, दिस सेक्शन, और थोड़ा सा अंदर डिप्रेशन, तो यहाँ पे इस तरफ से डिप्रेशन आ गया। फिर प्रेस पुल, ये जो हाइट है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। अब ये बहुत सारे स्टेजेस है, यहाँ पे अंदर चैनल बना हुआ है, इसके अंदर सील रखी जा सकती है या ऑब्जेक्ट होगा। इसमें की वे कट करना, इसमें की वे मैं चाह रहा हूँ कि कट करूँ। तो व्हाट वी कैन डू, चलिए एसी आइसोमेट्रिक कर लेते हैं। यहाँ पे की वे कट करना, तो लेट्स ड्रॉ द बॉक्स। ये बॉक्स आ गया एक। लेट्स मूव इट्स डायरेक्शन। इसको मैंने किसी सुटेबल जगह पे रख दिया। अब की वे काटना है, तो वी कैन यूज सब्ट्रैक्ट। क्लिक द सब्ट्रैक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट काटना है। किस वाले ऑब्जेक्ट में से? बड़े वाले ऑब्जेक्ट में से। नहीं, ये ऑब्जेक्ट जो है मर्ज नहीं थे। सब्ट्रैक्ट दिस बेस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये कट गया। सब्ट्रैक्ट इसमें से काटना है, ये वाला ऑब्जेक्ट। ये देखिए की वे कट गया इसके।